The disqualifications of an auditor as given in section 141 subsection 3. There are many points. The first point being any body corporate other than LLP, limited liability partnership. कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जाकर कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता है. इवन इफ इट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द क्वालिफाइंग CAs, you cannot go and audit a company. This is allowed. LLP is allowed, no other body corporate. Second point, employee or officer of the company. If I am a qualified CA but I am the employee of the company or I am the officer of the company, still I cannot go and audit the company. It is totally disqualified. You should not be either officer or employee of the company. C part, partners in the company are totally disqualified to go and audit, or who is the employment of officer or employee of the company. Any partner in the company is totally barred from going and audit the company. Fourth point, any relative is the director of the company or is in the employment as the key managerial post. Now, even if I am a qualified CA, but one of my relatives, my close relatives is the director of that company, I am disqualified क्योंकि मेरा रिश्तेदार वहाँ पर डायरेक्टर है या मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ पर की मैनेजरियल पोस्ट में है, बड़ी पोस्ट पे है, तो भी मैं जाकर उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकती. टोटली डिसअलाउड. Next point, who has been convicted by a court of an offence involves fraud, etc., and the period of 10 years from the date of such conviction will be considered. Me being a qualified CA, if I had a case against me which involved fraud, तो मैं वहाँ जाकर ऑडिट नहीं कर सकती. कन्विक्शन मतलब जिस दिन से मुझे सज़ा सुनाई गई है उस दिन से 10 साल तक मेरा डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा. आई कैनॉट गो टिल अ पीरियड ऑफ 10 years हैव elapsed फ्रॉम दैट कन्विक्शन. Next point, it's a little lengthy point, so be very careful. A person, his relative or his partner. Now, there are 3 different points in this. The first is a person. If that auditor is holding any security or having interest in the company, he is disqualified. अगर मेरा उस कंपनी में मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं फेस वैल्यू पर, 1 रुपये का भी खरीदा हुआ है या मेरा कोई इंटरेस्ट है उस कंपनी का, इट इज़ नॉट अलाउड. आई कैनॉट गो देयर. I am a debtor of the company or it is indebted to the company exceeding 5 lakhs. उस कंपनी ने मेरा पैसा देना है 5 लाख रुपीस तक का, it is totally. Less than 5 lakhs is allowed. Exceeding 5 lakh, it's not allowed. Third point of the same point, a person, I have given a guarantee. If I have given a guarantee, the company took a loan from somebody and I have given the guarantee that if company fails to repay it, I will pay for it. This is called the guarantee. Exceeding 1 lakh, if it is there, I am disqualified. 1 लाख से कम होगा तो हम ऑडिट कर सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा होगा तो हम ऑडिट नहीं कर सकते हैं. इसी पॉइंट का सेकेंड सब पॉइंट इज हिज रिलेटिव. इफ माई रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी माने शेयर्स एक्सीडिंग 1 लाख इन दैट कंपनी, आई एम डिस्क्वालिफाइड टू गो एंड ऑडिट. अप टू 1 लाख अलाउड होता है, 1 लाख से ज़्यादा डिसअलाउड होता है. वही मेरा रिलेटिव इज द डेटर ऑफ द कंपनी एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज, आई एम टोटली डिस्क्वालिफाइड. थर्ड पॉइंट, हिज रिलेटिव, he has given guarantee to the company exceeding 1 lakh. This is the repetition of the person वाले points का. Then also I am disallowed. मेरे इस रिश्तेदार के ये 3 points अगर उस कंपनी के साथ रिलेशन में हैं तो मैं disqualified हो गई. Third line point here is his partner. If my partner, I am having a partner who has a security in the company, then I am disqualified to go and audit in the company. My partner is a debtor or he is indebted to the company exceeding 5 lakh rupees, again I am disqualified. And thirdly, my partner has given guarantee exceeding 1 lakh to the company, again I am disqualified. I have broken up these 3 points into 9 points so that it becomes relatively easier. So the point stands, a person, a relative or his partner. These 3 points are disqualified to go there. Further, he can audit not more than 20 companies. एक ऑडिटर एक टाइम पर 20 पब्लिक लिमिटेड कंपनी से ज़्यादा का ऑडिट नहीं कर सकता है. मैक्सिमम लिमिट इज 20 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. प्राइवेट कंपनीज में अलाउड होता है. प्राइवेट कंपनीज वो होती हैं जिसका लेस देन 100 करोड़ का शेयर कैपिटल होता है. इन दीज कंपनीज, द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में स्मॉल कंपनीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, डोरमेंट कंपनीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड. 20 से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकता. नेक्स्ट पॉइंट, the auditor has the direct or indirect business relationship with the company, again I am disqualified. अगर मेरा फ्रेंड वो कंपनी चला रहा है या जो कंपनी चला रहा है वो मेरा फ्रेंड है और मेरे साथ उसका कोई और बिजनेस डीलिंग है, I cannot go and audit there. I am disqualified. The last point being, if I provide any service under section 144 of 2013 Act,
right? Any person who is directly or indirectly providing any services under this act, they will be totally disallowed. What type of services come under section 144 are the accounting, bookkeeping services, management services. अगर हम उस कंपनी में ये सब सर्विस करते हैं तो वो ऑडिटर जाकर नहीं कर सकता वहाँ पर ऑडिट. इट्स टोटली डिस्क्वालिफाइड. हियर द कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, all they will be appointed as the auditor of the company. It is not allowed. In this whole context, company here means holding subsidiary, associate, fellow subsidiary. If I am barred from going to audit a holding company, obviously subsidiary company में मेरा disallowed हो जाएगा, उस company के associate और fellow subsidiary companies में भी disallowed हो जाएगा. It will be automatically barred from the other companies also.